बुलेटिन का आगाज़ करना आपको बताएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ ताल्लुकात को सराहा। मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। जंग रुकवाने के लिए वज़ीर खारजा कोशिशें कर रहे हैं। इनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में नायब वज़ीर आज़म का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। तर्जुमान का कहना था कि मकालमा और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। चीन के वज़ीर खारजा से अफ़गान सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। And Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, the Honorable Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif, and Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar have held numerous telephone conversations with their counterparts across the region and the wider world. Additionally, the foreign ministers of Pakistan, Saudi Arabia, Turkey, and Egypt met in Islamabad, which our media colleagues extensively covered, and we issued press releases throughout the event. First of all, let me begin with this four-party meetings, consultations. This was the second of the series, second meeting of the consultations among the foreign ministers of Pakistan, Saudi Arabia, Turkey, and Egypt. You would recall that the first meeting was held in Riyadh on the 19th of March. Before formal talks in the group format, the visiting foreign ministers held bilateral meetings with the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, and I'm sure you cover our press releases that we issued on this meeting outlining the basic themes that were discussed. The Honorable Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif and Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar have held numerous telephone conversations with their counterparts across the region and the wider